शंकर भगवान की। अब एकैछिन यो श्रीमद्देवी भागवतको पाठ कथा हुन्छ। हजुरहरू एकैछिन शान्त भएर श्रवण गर्नुहोला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच नाहं गृहं करिष्यामि दुःखदं सर्वदापित बाहुरासदृशं नित्यं बन्धनं सर्वदेहिनां धनचिन्तातुराणां हि सुखं तात दृश्यते सुजनै खलु पीड्यन्ते निर्धना लोलुपा जना इन्द्रोऽपि न सुखितादृगे यादृशो भिक्षुनि स्त्रिया पुण्यशार्य संसारे त्रिलोकी विभवेशति तपन्तं तापसं दृष्टा मघवा दुःखितो भवा विघ्नानुभव विधानस्य करोति स दिवसपतिः ब्रह्मापि न सुखी विष्णुर्लक्ष्मी प्राप्य मनोरमां खेदं प्राप्नोति सततं संग्रामैरसुरैः करोति विपुलानि यत्नान् तपश्चरति दुःशरं रमापतिरपि श्रीमान् कश्यपि स्तव विपुलं सुखम् शङ्करोऽपि सदा दुःखी भवत्येव स वेदमयं तपश्चर्यं प्रकुर्वाणो दैत्ययुतकरः सदा तदाचिन् सुखिशेते धनवानपि लोलुपनिर्धनस्तु कथं तात सुखं प्राप्नोति मानवः जानन्नपि महाभागपुत्रमावीर्यसम्भवं नियुक्ष्यसि महाघोरे संसारे दुःखदे सदा जन्म दुःखं जरा दुःखं दुःखं च मरणे तथा गर्भवासे पुनर्दुःखं विष्टामूत्रमये पिता तस्मादतिशयं दुःखं तृष्णालोभसमुद्भवं यांसायं परमं दुःखं मरणादपि मानदव प्रतिग्रहधनाभिप्राणबुद्धिबलजीवना पराशा परमं दुःखं मरणं च दिने दिने पठिता सकला वेदान् शास्त्राणि च समन्ततः गता च दलिनाकार्य स्तुति सर्वात्मना बुधै एकोदरस्य का चिन्ता पत्रफूलफलमूलफलादिभिः केनापि पायेन सन्तुष्टा च प्रभुरतये भार्यापुत्रस्तथा पौत्रा कुटुम्बे विपुले सति पूर्णात्मा दुःखं सुखं पितुरद्भुतमये योगशास्त्रं मम ज्ञानशास्त्रं सुखकरमय कर्मकाण्डे अखिले तात नरेमेयं कदाचन बद कर्मक्षयोपायं प्रारब्धं संचितं तथा वर्तमानं यथा न त्रिविधं कर्म मूलजं जलुकेव सदा नारी रुधिरं पिबतीति वै मूर्खस्तु च विजानाति मोहितो भावचेष्टिते भोगवीर्ये धनं पूर्णमनकुटिलभाषणैकान्तारति सर्वस्वं कर्तेन तादृशोबर निद्रासुखविनाशार्थं मूर्खस्य दारसङ्ग्रहं करोति वञ्चितो दात्रा दुःखाय न सुखाय च श्रुतोवाच एवं विधानि वाक्यानि श्रुता व्यासशुकस्य च सम्प्रापमतिं चिन्तां किं करोमीति संशयं तस्य शस्त्रुगुरुश्रोणी रोचना दुःखी दुःखजानि च बेपतुष शरीरे उद्ग्लानिं प्राप्य मनस्तथा शोचन्तं पितरं दृष्टादीनं शोकपरिप्लुतमुवाच पितरं व्यासं विस्मयोत्फुल्ललोचन अहो महाबलं चोग्रं यन्मोहयति पंडितं वेदान्तस्य च करतारं सर्वज्ञं वेदसंविदं न जाने कथसाय मायां किं श्रुते शातिव दुष्कराय मोहयति विद्वांस व्यासं सत्यवती सुतं पुराणानं प्रवक्ता निवाता भारतस्य च विभागकर्तवेदानां स्वविमोहमुपागत ताम्यामिं शरणं देवी मोहयति वै जगते ब्रह्म विष्णुनरादे च कथयन्येषां च कीदृशे कोऽप्यस्ति त्रिषु लोकेषु यो न यदि मायया यन्मोहं गमिता पूर्वे ब्रह्म विष्णुरादय अहो बलमहो वीर्यं दिव्या खलु विनिर्मितं मायैव वशं नीत सर्वज्ञमेश्वर प्रभु विष्णुस्वंश सम्भवो व्यास इति पौराणिका जगु सोऽपि महार्णवे मग्नो वेदो बलियथा अश्रुपातं करोत्यद्य विवशो प्राकृतो यथा होमाय बलं चैतदुस्तजं पण्डितैरपि कोऽयं कोऽहं कथं चेयं कीदृशोऽयं भ्रम किल पञ्चभूतात्मके देहे पिता पुत्रेति वासना वरिष्ठा खलु मायेय मायिनानपि मोहिनी यया विभूत कृष्णोऽपि करोतिर्वदनं द्विज श्रुतवाच तं नता मनसा देवीं सर्वकारणकारणं जननी सर्वदेवानां ब्रह्मादीनं तदेश्वरीं पितरं प्रादिनं तं स्वकारणमपरिप्लुतम् आरणी सम्भव्यासं यतो मद्वदवचनं शुभं धाराचार्य महाभाग सर्वेषां भूतदस्वयं किं शोकं कुरुषे स्वामिन्यर्थाज्ञ प्रकृतो नरः अद्याहं तव पुत्रोऽसि न जाने पूर्वजन्मनि कोऽहं कस्तु महाभाग विभ्रमोऽहं महात्मनि
कुरु धैर्य प्रभुदस्य मान्विषादि मनः वृथा मोहजालमिमं मत्तं चोषकमामते शुद्धनिवृत्तिवक्षेण पुत्रदर्शनेन च पिपाशाजलपानेन याति नैवात्मते मध्ये क्षणात् घ्राणं सुखं सुगन्धेन कर्णजं सायश्रवणेन च त्रिसुखं च स्त्रियानूनं पुत्रं किं करोमि ते अजिगर्तेन पुत्रस्य हरिश्चन्द्राय बुभुजे पशुकामाय यज्ञार्थे दत्तमौलेन सर्वथा सुखानां साधनं द्रव्यं धनसुखसमुच्चय धनमर्जय लोभश्चेद पुत्रोऽहं किं करोम्यहं मम प्रबोधय बुद्धात्मं दैवज्ञेषि महामते यथामुचेयमत्यन्तं गर्ववासभयान्मुने दुर्लभं मानुषं धर्मं जन्म कर्म भूमाभिहानगः तत्रापि ब्राह्मणात्तं वै दुर्लभं चोत्तमे कुले वद्धोऽहमिति मे बुद्धिर्नापसर्पति चित्ततः संसार वासना जाले निविष्टा बुद्धिगामिनी श्रुतवाच इति तर्थ तदा व्यासपुत्रेणामित बुद्धिनः प्रतिवाच सुखं शान्तं चतुर्थाश्रममानसम् व्यास उवाच पठपुत्र महाभागमया भागवतं कृतं शुभं साति च विस्तीर्णं पुराणं ब्रह्म संहितमे कन्दा द्वादश तत्रैव पञ्चलक्षणसहितं सर्वेषां च पुराणानां भूषणं मम सम्मतं सदा सद्ज्ञानविज्ञानं श्रुतमात्रेण जायते न भागवतेन यथा कथं तु महामते पटपत्रसनाशाय विष्णवे बालरूपिणे किनाश्मी बालभावेन दिम्बितुं चिदात्मनः किमर्थं केन द्रव्येण कथं जानामि चाखिलमये एतेवं चिन्तयमानाय मुकुन्दायमात्मने स्वगार्धेन दया प्रत्नं भगवत्याखिलार्थदं सर्वकल्पविदाव्याहं नान्यदस्तदि सनातनं तद्वचो विष्णुः पूर्वं संविज्ञातमनस्यापि केन उक्तवाक्यं सत्यचिन्तायामाश चेतसा कथं वेद्मि प्रवक्तारं त्रिपुंसं सर्वमानुषगमये चेतसा कथं व्यक्ति प्रवक्तारं त्रिपुंसगणपुंसकमिति चिन्ता प्रपन्नेन कृतं भागवतं हृदि पुनर्केन कृतोच्चारः तस्मिन्नेव सचेतसा वटपत्रे शयनं षड्गुणचिन्ता समन्विता तदा शान्ता भगवती प्रादुराशं चतुर्भुजा शङ्खचक्रगदा पद्मपरायुधरा शिवा दिव्याम्बरधरा देवी दिव्याभूषणभूषिता संयुता सददेवी शशि विश्वविभूतिभिः प्रादुर्भगवतस्याग्रे विष्णुरमित तेजसि मादा आश्यं प्रयुञ्जाना महालक्ष्मी सुवानना श्रुतवाच तां तथा शान्तिदेवचारिदये कमलेक्षण विस्मिताशालिले तस्मिन् निराधारं मनोरमामैरतिर्भूतिस्तथा बुद्धिर्मते कीर्तिस्मृतिर्नितिस्रता सदा सोदा सुधाग्निद्रतयास्यति तुष्टिपुष्टिशमालज्जा शिवरां जिह्वातन्द्रिम्भातन्द्रा सशक्तया शान्तिता सर्वतपाशे महादेव पृथग्भृतये वरायुधरा सर्वनानाभूषणभूषिता मन्दार मालकुलिता मुक्तार विराजिता तान्दृष्टा तांश संवेक्ष्य तस्मिन् कुण्डे कारणवे जले विस्मयाविष्टहृदय सम्बभूव जनार्दन चिन्तयामाश सर्वत्मदृष्टमाद्दिविस्मितः कुतो बुधप्रिय सर्वकुतोऽहं पततल्पगः अस्मिन्ने कारणवे घोरे न्यग्रदं कथमोत्थितः केनां थापिनोऽप्यहं शिशुकृता सुवाकृतिः मह्यं जननी नोया मायावा कापि दुर्गता दर्शनं केनचित् त्वद्य तत्त्वा केन हेतुना किमया तत्र वक्तव्यं गन्तव्यं वा न कचिदे मौनमास्ताय तिष्ठेयं बालभाव तदतन्द्रितः बालभावगतन्द्रितः हरि ओं तत्सते अथ षोडशोऽध्यायः व्यास उवाच दृष्टा तं विश्रुतं देवं शयानं वटपत्रके उवाच सततं वाक्यं विष्णु किं विस्मयोऽसि महाशक्तप्रवाहेण त्वमां विस्मृतवान् पुरा प्रलये जाते भूता पुनः पुनः निर्गुणा शपराशक्ति सगुण तथाप्यहं सात्विकी किलया शक्तितां शक्तिं विद्धिमामिकां त्वान्नामि कमला ब्रह्म भविष्यति प्रजापति शकर्ता सर्वलोकस्य रजगुणसमन्वितः शतदा अपास्ताय प्राप्त शक्तिमनोत्तमामय रजसारक्तवर्णस्य करिष्यसि जगत्रयं सगुणः पञ्चभूताश्च समुपाद्य महामतिः इन्द्रियाणि इन्द्रियेशाश्च मनःपूर्वं समन्ततः करिष्यति ततः सर्वं तेन ततः समुच्यते विशेषाश्च महाभागतमेवालयिता तथा ततः पुप्रोन्मध्यदेशाश्च क्रोधादुर् भविष्यति तदुपतमागुरप्रापशक्तितुभतामसि कल्पान्तेषु समाप्ता भविष्यति महामते तेनां तं पायत सात्विकीं तामवेदि मां थास्येऽहं तत्समीपस्थं सदाहं मधुसूदन हृदयति पितावास भवामि सततं किल विष्णुर्वाच श्लोकशातमया पूर्वं श्रुतं देवी स्फुटाक्षरं तत्तेनोक्तं मरारोहे परमं शिवं तन्निवृहि मरारोहे परारोहे संशयोऽहं मराननिर्जन यथा द्रव्यं तस्मात् तत्स्मरामि पुनः पुनः व्यास उवाच विष्णु तद्वचनं श्रुता महालक्ष्मी स्मिता ननावाच परया प्रीतवचनं चारुहासिनीः श्रीमहालक्ष्मीर्वाच शृणुशौर्यवशमयं सगुणं चतुर्भुजा मां जानासि जानासि निर्गुणा शौरालया तं जानामि महाभागतया तत्प्रकटीकृतं पुण्यं भागवतं विधिं वेदसारं सुभावहं कृपां च महतीं मन्ये देवाशत्रुनिषूदन यया पृथं परं गुह्यमिताय तौ सुब्रता रक्षणीयं च सदा चित्ते विस्मार्यं कदाचन सारं हि सर्वशास्त्राणामाभित्य प्रकाशितमे
तात परं वेदितव्यं वर्तते भुवनत्रये प्रियेषु खलु दिव्यास्तं तेन ते व्याहृतं वचः व्यास उवाच इति श्रुतवचो दिव्य महालक्ष्मी चतुर्भुज ददात हृदये नित्यमतं मन्त्रमनुत्तमं कालेन कियता तत्र तन्नादिकमनुद्भव ब्रह्मदैत्य भया तत्र जगाम शरणं हरे तत्र कृतमायुतमाता तौ मधुत्कैटभौ जगाप भगवान् विष्णु श्लोगातं विशदाकरम् जपन्तं वसुदेवं स दिष्टं देवं जगते प्रजापति प्रपक्ष परमप्रीत कञ्जला कमलापतिं किं तं जपसि देवेश तत्तकुप्यधिकोऽस्ति वै स्मृतां पुनरिकाक्षं च प्रीतोषि जगदीश्वर हरिर्वाच मयि त्वयि च या शक्ति क्रियकारणलक्षण विचारय महाभागशायाशा भगवती शिवाय सदारे जगत् सर्वं तिष्ठत्यत्र मारणवे सकाराश महाशक्ति रमेया च सनातनी यया विसृजते विषं जगदेत चराचरं शैषा प्रसन्नवदनां नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर्यतृता सनातनी संसार बन्धयेत सर्वसर्वेश्वरीश्वरी अहमखिलमखिलं विश्वं दशाशिते सर्विसम्भवम् विद्धि ब्रह्मण संदेह कर्तव्य सर्वदा नग श्लोकातेन तया प्रोक्तं तद्वै भागवतं किल विस्तरो भविता पश्यदापराधस्य तथा व्यास उवाच ब्राह्मण संगृहीतं संगृहीतं च विष्णुस्तु नाभिपङ्कजे नारदाय तेनोक्तं पुत्रायामितबुद्धये नारदेन तथा मयं दत्तं मुनिना पुरा मया कृतमिदं पूर्णं द्वादशस्कन्धविस्तरं तत्पदश महाभागपुराणं ब्रह्मसंहितं पञ्चलक्षणसंयुक्तं लक्षणयुक्तं च देवस्तरितमुत्तमम् तत्त्वज्ञानरसोपेतं सर्वेषामुत्तमोत्तमं धर्मशास्त्रसमं पुण्यं वेदोक्तोपप्रेमितं वेत्रशूरवर्तोपेतं नानाख्यानकथायुतं ब्रह्मविधाननिधानं तु संसारानवतारकं गृहान्तं महाभागयोगेषु मतिमत्तर पुण्यं भागवतं नामं पुराणं पुरुषर्षवाष्टादशसहस्राणां शोकानां कुरु संग्रहम् अज्ञाननाशनं दिव्यं ज्ञानभास्करबोधकं सुखदं शान्तिदं धन्यं दीर्घायुष्करं शुभं शृण्वता पठतां चेदं पुत्रपौत्रविवरदनमय शिष्योऽयं मम धर्मात्मलमर्षणसम्भव पठिष्यति तया शातं पुराणं संहितां शुभां श्रुतोवाचयति तं तेन पुत्राय मयं च कथितं किल मया गृहीतं तत्सर्वं पुराणं चातिविस्तरं सुबोधितं पुराणं तु तितो व्यासश्रमेषु वे नलेवे सर्वधर्मात्मा ब्रह्मात्मा च युवापर एकान्तसेवी विकलशून्यैव लक्ष्यते नात्यन्त भोजनाशक्तोनुपवासरतस्तदा चिन्ताविष्टं सुखं दृष्टव्यासप्तः सुतप्रति किं पुत्र चिन्तये नित्यं कस्मादवक्रोशिमानदास्मि ध्यानपरो नित्यं मृणानुग्रहैवाधनाः का चिन्ता वर्तते पुत्रमयिता ते तु तिष्ठति शुभं वृक्षमेधा कामं च शुभं मनोगतं ज्ञानचिन्तय शास्त्रोक्तं विज्ञाने च मतिं कुरु न चिन्मनसि ते शान्तिर्वशसा मम सुव्रत गच्छतं मिथिलापुत्र पालितं जनकेन सते मोहमहाभागनाशयिष्यति भूपति जनकुनां धर्मात्मविद्या सत्यसागर तं गच्छां नृपतिं पुत्रं सन्देहं निवर्तय वर्णाश्रमाशानं धर्मात्मं पुत्र यथा तथा जीवन्मुक्तसरागस्य ब्रह्मज्ञानमतिषु च तथ्यवक्तति शान्तश्च योगी योगप्रियः सदा श्रुतवाच तत्श्रुतवचनं दश व्यासमित तेजसः प्रतिभास महातेजसुखसारिण सम्भवः तं वयं किल धर्मात्मने महातेजिते ममाधुना जीवनोक्तो विधेयश्च राज्यं शातिमुदान्विता वन्यपुत्रैव वातिरादशो जनकपितः कुर्वन्राजं विधेय किं सन्देहमार्बुद द्रष्टुमिच्छामहं रूपं विधेयं नृपशतमं कथं तिष्ठति संसारे पद्मपत्रमिमामशे सन्देहं महातात विधेयः परिवर्तते मोक्ष किं वदतां श्रेष्ठ सौगातानामिवापर कथं भुक्तमभुक्तं स्यात् कृतं च कृतं कथं व्यवहार कथं त्याजेन्द्रियाणां महामते मातापुत्र तथा भार्या भगिनी कुलता तथा वेदा वेद तथा स्याद्यदेतदमुक्तता एतन्मुक्त तथा कथं कटुक्षारं तथा क्षीणं कषायमिष्टमेव च रत्ना यदि जानाति भुङ्क्ते वगाननुत्तमान् शीतोष्णसुखदुःखादि परिज्ञानं यदा भवेत् मुक्ततां कीदृशेतात सन्देहं ममाद्भुतं शत्रुमित्र परिज्ञानं वैरं प्रीतिकरं सदा व्यवहारे परितिष्ठन् कथं न कुरुते नृपश्चम्रौ सौरं वातौ समापि सामनं मन्यते कथमाशम यदि बुद्ध्या सन्मुक्तता तर्हि कीदृशी दृष्टपूर्वनमेकाशीं जीवनमुक्तस्य भूपति सङ्गेयम् अतीतात गृहमुक्त कथं नृपः दिदृक्षामादि जाता श्रुता तं भूपतिं तथा सन्देहविनिवृत्त्यर्थं गच्छामि मिथिलां प्रति दिदृक्षामादि जाता श्रुता तं भूपतिं तथा सन्देहविनिवृत्त्यर्थं गच्छामि मिथिलां पतिमे हरि ओं तत्सत् बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की प्राणी मात्र की
वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय। अब एकैछिन तल दिदीबाट नजुनुहुन्छ। श्री कालिके कमले